કોંગ્રેસ નેતા રાહુલ ગાંધીએ આરએસએસના ચીફ મોહન ભાગવત પર રાજદ્રોહનો આરોપ મૂક્યો છે। મોહન ભાગવતે રામ મંદિર બન્યા બાદ દેશની સાચી સ્વતંત્રતા મળી હોવાનું નિવેદન આપતા રાહુલ ગાંધીએ આરોપ મૂક્યો હતો કે આવું કહેવું એ દરેક ભારતીયનું અપમાન છે કે જો કોઈ બીજા દેશમાં મોહન ભાગવતે આ પ્રકારનું નિવેદન આપ્યું હોત તો તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હોત। ભાગવતે એક સમારોહમાં નિવેદન આપ્યું હતું કે અયોધ્યામાં રામલલાની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાની તિથિને પ્રતિષ્ઠા દ્વાદશી તરીકે ઉજવવી જોઈએ, કારણ કે અનેક સદીઓથી દુશ્મનોના આક્રમણોનો સામનો કરનાર ભારતની આ દિવસે સાચા અર્થમાં સ્વતંત્રતા પ્રતિષ્ઠિત થઈ હતી। અગાઉ સ્વતંત્રતા હતી પરંતુ સાચા અર્થમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ ન હતી। ત્યારે રાહુલ ગાંધીએ જણાવ્યું છે કે ભાગવતે જે કહ્યું છે તે રાજદ્રોહ સમાન છે। તેમના આ નિવેદનનો અર્થ એ થાય છે કે બંધારણ ગેરકાયદેસર છે, અંગ્રેજો વિરુદ્ધની લડાઈ ગેરકાયદે છે। કોઈ અન્ય દેશમાં આ પ્રકારનું નિવેદન આપ્યું હોત તો તેમની ધરપકડ થાત અને તેમના પર કેસ પણ ચલાવવામાં આવત। સાથે જ રાહુલ ગાંધીએ વધુમાં કહ્યું છે કે ભાગવતનું આ નિવેદન દરેક ભારતીયનું અપમાન છે। હવે તે સમય આવી ગયો છે કે આ પ્રકારની વાહિયાત વાતોને સાંભળવાનું બંધ કરવું જોઈએ। બે વિચારધારા વચ્ચેની લડાઈ છે અને અમારો વિચાર બંધારણનો વિચાર છે, જ્યારે આરએસએસના વિચારધારા તેનાથી વિપરીત હોવાનું જણાવ્યું હતું। And our ideology does not emerge yesterday. Our ideology, like the RSS ideology, is thousands of years old, and it has been fighting the RSS ideology for thousands of years. We have our symbols. We have Shiva, we have Buddha, we have Guru Nanak, we have Kabir, we have Mahatma Gandhi, we have our symbols. And these are all the symbols who have shown the correct path to this country. Please name one symbol of the RSS ideology that is revered in India today. Name one symbol. Was Guru Nanak from the RSS ideology? Was Buddha from the RSS ideology? Was Krishna Bhagwan from the RSS ideology? Not a single one. Because every single one of these people fought for equality, fought for brotherhood, fought for affection. And so the last thing I would like to say is that this building has emerged from the blood of Congress people, and not just Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Patel ji, not just these people. It has emerged from the blood of our workers, from every single one of our leaders. That includes all of you who are today defending the idea of the Congress Party. Everybody in this room is under severe assault defending the ideas of the Congress Party. Sometimes we forget it. But these people in this room are facing systematic attack and assault on their lives because they are in the Congress Party. And they are not surrendering to the BJP and the RSS. And in the same way, thousands of workers are there. But there are also thousands of people who believe, millions of people who believe in the Congress ideology. They're sitting outside the Congress. And that is why, the same way this building has emerged from the soil of our country, from the blood of our leaders, from the blood of our workers, this building, the idea behind this building must also reach the corners of our country. That is the duty of this building. That it does not just remain a building, that the ideas that are inside this building reach the corners of our country. Reach Tamil Nadu, Kashmir, Northeast, Gujarat, Andaman, Lakshadweep, every corner of our country. This idea has to be propagated from this building. जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आज़ादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है। आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है
भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला और ये कहा कि रियल आजादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आजादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आजादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आजादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में, और मुझे आजादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आजादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आजादी के लिए मरे हैं, आजादी के लिए ठोकरें खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको मैं कंडम करता हूं, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। आदरणीय चंपत राय जी, समिति के सभी माननीय पदाधिकारी, आदरणीय ताई जी, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ है। पहले अब कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है, क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं हुई, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सब साकार, कैसे मान ले आप? टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले हम? ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है, वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। हमारा स्व क्या है? राम कृष्ण शिव, ये क्या केवल देवी देवता है? क्या केवल विशिष्ट उनकी पूजा करने वालों के हैं? ऐसा नहीं है। राम उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ते हैं, लोहिया जी ने कहा है। कृष्ण पूरब से पश्चिम जोड़ते हैं, और शिव भारत के कण कण में व्याप्त।